Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Okay. I hope you all have seen the WhatsApp message. So attendance will be taken at the end. Everyone is expected to join via laptop, and please switch on your cameras. Guys, switch on your cameras, please. मैं करूँ क्या पहले? ठीक है. Hello, Kuber. Okay. Anyway, this session is recorded. Every session is recorded, so this will be checked, just so you know. Okay. Sharing my screen. Okay, before that, yeah. Last time I had given assignment 2 and 3. So IPv4 and 6 is not necessary to represent, but just give me like highlights, like points. What are the differences, similarities, or anything, any information on assignment 3? Anyone can, if you want to say it all, you can say it all. Different people can highlight different points. So go ahead. I haven't gone through all of the mails. I did not get much time. I will get to it soon. But I do see a lot of mails. Assignment 2. Sorry, assignment 3 and 4. Come on, someone. IPv4, IPv6. I see Ashay's mail of that assignment, but he's not there. It's assignment 3 and 4. Yeah, sorry, this should be assignment 3 and 4, I guess, not 2 and 3. Anyway. So IPv4 has 32-bit length and IPv6 has 128-bit length. Okay. Others? IPv4 supports manual and DHCP address configurations, Okay. and IPv6 supports auto and renumbering address configuration. Okay. असाइनमेंट किए हो ना सब लोग?
Yes, sir. ठीक है. मुझे दिग्विजय का assignment 3 दिख रहा है. Digvijay, you have sent me links. Is it links to your share drive? Yes, sir. Okay. ठीक है, मैं देखता हूँ ये बाद में. Okay. Any more points apart from just the two you mentioned? IPv4 consists of 4 fields which are separated by addresses dot, and Yes. IPv6 consists of 8 fields which are separated by colon. Yes. Okay. ठीक है. The IPv4 is represented in decimal number and IPv6 is represented in hexadecimal numbers. Yes. IPv6 contains hexadecimal numbers. Okay. Do you know what hexadecimal numbers are? Everyone? Yes, no, fast. Yes, sir. Okay. Others? Just a simple yes or no. Do you know hexadecimal or no? You're on mute, Richa, if you're saying something. It's that 0 and 1s, right? That's binary. Okay. I'm assuming Kunal doesn't know. Others? Yes, sir. Yeah, did you say something, Shrecha? Yes, sir. Hexadecimal number knows. No? Okay. It's Digvijay? 0 to 15 and Mhm. Yeah. the 9 it represents as A, B, C, D, E and F. Yeah. Okay. Take a second. So these are all formats in which data is represented. Okay. Now basic is binary, common for all. Okay. All computers in the world understand ones and zeros. Why? Because it's the electrical signal, on and off. That's it. Okay. Another way of representing, matlab upon binary you can say. Okay. Based on binary, या फिर another way of this representing data is called hexadecimal format. ठीक है? Hexadecimal format. Sharing screen. Screen visible है? Yes, sir. Good, 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 good. ठीक. So binary numbers, ठीक है, उसमें होता है सिर्फ ones and zeros. This is basic building block of computer understanding. All computers understand ones and zeros. Every data is represented in ones and zeros at the end. There is also another hexadecimal. ठीक है, इसमें data is represented from 0 to 9, and for 10 there is A, for 11 there is B, for 12 there is C, for 13 there is D, for 14 there is E, and for 15 it is F. Okay, this is the representation of hexadecimal.
So sometimes you may see like files or data like AE. Okay, so that means it's 10 and 1 4, and then this again gets converted to binary. So it's like 1 0 0 0 1 0 0 0. So the 1, so the 0, then 0 0 0 1 for the 1, and 0 1 0 0 for the 4. Okay, so it goes from hexadecimal to binary in the end. At the end of the day, everything is binary, but a simple representation above binary is hexadecimal. It is represented like this. Okay, so data is represented in numbers from 0 to 9, and after 10 it's alphabets A, B, C, D, E, F, where this is 0 to 9 and this is 10 to 15. So A is 10, B is 11, C is 12, D is 13, E is 14, F is 15. A simple Google search okay, number system and usage. Okay, you'll get everything. For example, if you go here, see, so decimal is this, binary is this, and hexadecimal is this. So 15 is all ones, but hexadecimal is represented as 15. Sorry, F. Okay, got it clear? Yes, sir. Okay. That's the simple. Let's keep it here. If you want to search, you can do another thing, which is use of. Let's go here. See, to define locations in memory, hexadecimals can characterize every bit, so and so. To define colors on web page, to represent media access MAC addresses. Okay, so these are the different uses of hexadecimal. This is how, sorry, this is how hexadecimal is used. This hexadecimal is again converted into binary because that is the basis on which you know computers understand. So there is another what do you say, sometimes what happens when you're going through network and malware files. Okay, when you're going through malware files, the memory locations, the files, the data, bits of data are represented in hexadecimal. Okay, so for example, like FF, what does it mean? It means 15 and 15. In binary, what is it? It is 111 1111. Okay, simple. Now this table over here. Okay, zeros to binary to hexadecimal. Let's convert a few. Okay, so let's say there is a memory location of 9, A, and F. Okay, this is a memory location. Okay, this is in hexadecimal. Convert it into binary because that's what the computer is going to understand. Give me the answer for this. अरे सिर्फ दिखाने के लिए कैमरा ऑन किया था क्या? कैमरा ऑन रखो यार. I'm telling you from experience, this they will create a problem questioning. ये लेक्चर के वक्त क्यों बंद था, कहाँ थे, अटेंडेंस, ये वो. It's a problem. Why unnecessarily? Yeah. Kunal, Dikvijay. Dikvijay, are you even there in class? ठीक है, others calculate करो. Sorry, it's not on screen, right? Yeah. 9AF in binary.
you refer this ऊपर. ठीक. First 9 कैसे लिखेंगे? So this is So 9 in hexa, it's in binary it is 1001. yeah, good. And So this becomes A, 9. yeah. Hmm. And for A 1010. Good, good, And nice. F is 1111. Yes, F is 1111. Good. This is enough. Okay, everyone got it? Any doubts still? Ask here. Again, these are very basic building blocks. ठीक है? इस पे memory locations, malware file data, बहुत सारा data hexadecimal में converted रहता है. So if you are analyzing something, let's say tomorrow you go into information security or system security and all these things, the hexadecimal will come a lot into picture, and you'll have to go through the file data, and that file data is obviously encrypted. How it is encrypted? It is in hexadecimals. Okay, it's not going to be hi, hello, English language mein nahi rahega. It will be in this form, the hexadecimal form. ठीक है? Clear? Okay. Hexadecimal का basic याद रखना 0 to 9 and A to F. Okay, if you want to use this, just a simple Google search will tell you what it is used for. I'll try to get you examples of files and networking data जिसमें वो hexadecimal होता है. ठीक है? Okay, next. Sorry. Yeah, we were going through IPv4 versus IPv6 assignment 3 technically. Forwarding based on label individual PPT. Let's go. Start representing. Again, I don't expect a lot into this, deeper into this. This is a vast topic, but at least some idea. Like I said, like how I told you about hexadecimal is 0 to 9, 8 to 15. So and so use. This is the conversion. So that much information is enough on forwarding based on labels. Yeah. Digvijay assignment I see. Momita I see. Okay. V4, V6. Others. Let's go. As you can see, Momita, it's your lucky day. Represent. Okay. Digvijay. Yes, sir. Represent the assignment forwarding based on label, sir. Sir, actually, here is a power cut, so my laptop is totally dead. So I am attending this lecture on my phone. I will present it next time. Sure. Sure, sure. Kuber. Yes, sir.
Any problem? कुछ हो रहा है? शेयर नहीं हो पा रहा है sir. ठीक है, देखो फिगर आउट करो। श्रेचा या फिर कुणाल, तुम में से किसी का हो रहा है तो प्लीज गो अहेड। कुणाल शेयर करो असाइनमेंट। ओके, कुबेर का हो रहा है। How many slides? Okay, you can skip the introduction and thank you. Just go on directly start from the content. Yeah. Mute. You're on mute. So it's a method used in networking to forward packets based on labels rather than network addresses, commonly implemented in MPLS, that is multi-protocol label switching. Um, Traditional IP forwarding, it uses destination IP addresses and longest prefix matching, requires a routing label lookup at every hop. Packets are forwarded based on fixed length labels. It reduces the need for extensive table lookups. Labels are short fixed length identifiers attached to packets. Uh, Label edge routers are that add or remove labels at the edge of an MPLS network. Label switching routers that forward packets based on labels. Header components. So label value identifiers It's 10 used o'clock. for forwarding decisions. Stack bit indicates the bottom of the label stack. Traffic class and used for quality of service handling. Time to live similar to IP TTL prevents infinite loop. So forwarding mechanism for MPLS label assignment. Labels are assigned by LSRs based on network policies. Label distribution, label paths known as labeled switch path are set up. Routing protocols such as LDP are used. What is LSR in this? What's up? Labels are assigned by LSRs based on network policies. What is LSRs? LSR is logical shift right. Mm, No, it's a label switching router. Label switching routers. Yes. Okay. Next. Ingress examples of label switching. Ingress LER receives IP packets and assigns a label, and LSRs forward the packet based on label without IP lookup. Ingress LER removes the label and forwards the original IP packet. Advantages of label-based forwarding. Faster packet forwarding, no need for deep packet inspection at every hop. Scalability efficiently manages large number of flows. Quality of service labels can be used to prioritize traffic.
use case of label-based forwarding. Traffic engineering enables efficient use of network resources. VPN services supports MPLS VPNs to create isolated networks. Faster recovery supports rapid rerouting around network failures. Okay. So लेबल का कोई ऐसा फोटो है जिस हेडर्स फोटो जिसमें देख सकते हैं Uh, like what is labels? Like I still don't know what is labels. Like how does it look? no, sir. It's okay, you can Google search, that's fine. Label is a programming and assembly language. It is No, a symbolic name of or identifier used to mark specific location or code in code. okay. So what I mean is कि जैसे protocols या फिर रहते हैं उसके headers होते हैं, right? 0 to 48 bits for diagram होता है basically. So what is labels? Is it a text? Is it a header? Is it some bits like or hexadecimal conversion? कोई calculation? कोई diagram है क्या इसका ऐसा? Like that I'm saying. Do you have something which you can show as a diagram as a part of calculation or a process? No, You sir. search and Yeah. come back in 5 to 10 minutes. Okay, sir. Yeah. Next, Shreya. Yes. So it's visible. So is it visible? So I can't hear you. Yeah, visible. Sorry. So label-based forwarding is especially used in MPLS network. MPLS is a multi-protocol label switching network. Label-based forwarding is a method of forwarding packets in a network where decisions are based on labels attached to the packets rather than a traditional IP packets. Whereas the primary purpose of label-based forwarding in network is in especially in MPLS network is to enhance the efficiency and flexibility of packet forwarding and routing. Then the key components of label-based forwarding. First is a label. Labels are a short and fixed length identifier that are added to the packets. They are used to determine the next hop without needing to perform complex routing lookups. Then second is label switching routers. Label routers that are used labels to make forwarding decisions. They read the labels and determine the next hop and then forward the packets accordingly. Then another one is a label distribution. Labels are distributed between the routers using protocols like IDP and RSVPT. Then RSVPT is a resource reservation protocol with the traffic engineering, and LDP is a label distribution protocol. Forwarding equivalence class, a group of packets that are forwarded in the same manner, typically sharing the same path through the network. Then label stack. MPLS supports stacking multiple labels, which allows for a more complex forwarding labels or such as VPNs or traffic engineering. Then how label forwarding is works.
Then first is Ingress LSR. The entry router in MPLS network attaches labels to the incoming packet based on its destination IP address or other criteria. Then label switch routers. It is an intermediate router. Read the labels and forward the packet to the next hop based on the pre-configured label forwarding information base. Then egress LSR, the exit router, removes the labels and forward the packet based on its destination's IP address. Okay. Does everybody know what ingress and egress is? What is meant by ingress and egress? Yes, no? It's a simple question. No, sir. Okay. Anybody else? Okay. Ingress means incoming connections, okay, inbound, and egress means outgoing connections, outbound. Okay. So that is why from computer to, according to that arrow, connection is coming from to him, towards him. That is why it is ingress, and going from the router, okay, to the last PC, the 192 label address, it is going out. Hence it is egress. Okay. It is an outbound connection. This is important because this is the terminology used. ठीक है, बात करते वक्त in as an engineer, as a company, this is what you say. You get request based like with that word. Okay, ingress and egress. Please make a note of this. Okay, so basically, as this works is it's based on label कि instead of IP address label based forwarding करूंगा कि I know कि ये मुझे भेजना है label number 6 पे, ये मुझे भेजना है label number A पे, I send it and उसके बाद फिर IP address उसको खोल के उसके अंदर जो भी IP address है to that I send. Okay, yeah, sorry for interrupting, go on. The benefits of label-based forwarding are efficiency. LBF enables routers to make forwarding decisions based on a fixed length labels rather than performing a complex lookups in the routing table. This results in faster packet forwarding and reduce processing overhead. Then traffic engineering. LBF enables the network operators to control and optimizes the flow of traffic through the network. Then third one is scalability. LBF allows the use of labels to represent paths through the network, simplifying the management of routing in a large and a complex network, making it easier to scale the network. Then it supports the virtual private networks uh, for a secure and isolated routing instance. Then it's okay. The label-based forwarding is a core component of MPLS network, enabling efficient and scalable packet forwarding, or it supports advanced networking features such as traffic engineering and VPNs, making it a versatile solution for a modern network. Yeah. Thanks. Thank you. This was a good PPT. So Shreja is done. And Kuber is done. Okay. For others, I had told you there will be no extra time. Okay, the representation is fine. So if by today evening this assignment is not there, I will mark it as not submitted. Okay, so for now only Shreja and Kuber have submitted. Digvijay ka problem. So I'm assuming ki you will submit via mail and I'll mark it as submitted. Yes, Okay. sir. Yeah. Next.
Okay. I think we went through the theory of address resolution protocol. Okay. It stands for address resolution protocol. It is a network protocol used to determine the MAC address of from an IP address. Does everybody know what MAC addresses are? बोलो यार ये सिंपल यस नो में इतना टाइम लगता है क्या? Is everyone there? Hello? Yes, sir. Yes, sir. So, do you guys know what's a MAC address? So we know that it works in data link layer. That's it. That's it. Okay. Anything else? It is a media access control address, unique identifier assigned to network interfaces. Um, somewhat correct, not exactly. Okay. बाकी तीन तो ना के बराबर है क्लास में. ठीक है. ठीक है. If you do IP config, ठीक है. See, you see there is an IPv4 address. Okay. And okay. Right. All. I think it's slash all, yeah. IP config slash all. Yeah, see. So my MAC address is going to be the physical address. Okay. You see 60A5E241B9D6. ये Yes, कौन sir. से फॉर्मेट में है? ये नंबर Hexadecimal. yes. See another use of hexadecimal. तो ये हेक्साडेसिमल में ठीक है 60A5E241B9D6. इसको फिर बाइनरी में करोगे तो 1010 वाला होगा. And if you want to and from there you convert it into this decimal if you want. Okay. So यहाँ पे मेरा IPv4 क्या दिख रहा है? My IPv4 address is 192 sorry 1 अच्छा ठीक है ये जा ही रहा है 168.0.101 and my physical address or MAC address is I'm not going to write the whole, just first three. Okay. A5 E2 something something. ठीक है. Now तो ये जो IPv4 address जो आता है ना, IPv4 address जो आता है, it is given by ISP, internet service providers. Okay, वहां से वो आता है राउटर को and that router gives me this IP address. So basically मेरा जो internet service provider है, Airtel, Jio, Tata, Hathway, whatever, that provider gives my machine laptop this address. और ये जो physical MAC address है, this is given to me by my manufacturer. ठीक है. My manufacturer is Dell. तो Dell अपनी कंपनी में फैक्ट्री में जब ये मशीन बनाता है तब उसको एक यूनिक एड्रेस मिलता है जो कि होता है फिजिकल एड्रेस, मैक एड्रेस, एंड दिस इज दैट एड्रेस. ओके. दिस एड्रेस नेवर चेंजेस. दिस IPv4 एड्रेस विल चेंज. अगर मैं यहां से अमेरिका गया तो दिस एड्रेस विल चेंज. अगर मैंने जियो से टाटा को स्विच किया तो दिस एड्रेस विल चेंज. बट दिस फिजिकल एड्रेस विल नॉट चेंज नो मैटर what. Pretty simple. Okay. Now base again, anybody has any doubts? ठीक है.
Based on this, there is a protocol, address resolution protocol. ये क्या करता है? IPv4 addresses को maps to MAC addresses. इसका मतलब it maps this, just a minute. Yeah, sorry. ठीक है, एक और minute. Yes. So it maps to this. तो इसका मतलब it will map, मतलब एक टेबल रहेगा, उसमें वो बोलेगा कि 192.168.0.101 का MAC एड्रेसेस 60 A5 E2 something something. ठीक है? So this is a 1-to-1 relationship जिसमें IPv4 is mapped to this MAC address. उसको समझ में आता है कि इसके फिजिकल एड्रेस का आईपी एड्रेस ये है एंड वाइस वर्सा. ठीक है? तो व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट और हाउ दिस प्रोटोकॉल वर्क्स, लेट्स सी. ठीक है? तो एक लेट्स पिक अ स्मॉल व्हाट यू से नेटवर्क. ठीक है? एक सेकेंड. Excuse me. Okay. So let's ठीक है, यहाँ पे एक पीसी है. ओके, लेट्स से PC1. इसका एड्रेस है 10.0.0.10/24. okay, this is connected to a switch. This is connected to another PC2. इसका एड्रेस is 10.0.0.20/24. स्विच किस लिए यूज होता है? डू यू रिमेम्बर? लास्ट टाइम मैंने बताया था. Switch is used for internal communication between local LAN communication. एक पीसी से दूसरे पीसी में बात होने के लिए स्विच यूज होता है. अगर इंटरनेट से बात करना है, यू यूज अ राउटर.
Okay, routers have interfaces. Interfaces मतलब एक side, एक building. This is one interface. This is another interface. Interface 1, interface 2. Interface 1 is facing locally, internally. Interface 2 is facing towards the internet. Okay, so this is facing internal and this is facing to the internet. Okay, interfaces will have different will have different IP addresses. So this interface has an IP address of 10.0.0.1/24. तो मतलब घर के लिए लाइक ये जो इंटरनल है उन सब के लिए इस राउटर का आईपी एड्रेस है 10.0.0.1/24 और बाहर की दुनिया के लिए इंटरनेट के लिए इस राउटर का एड्रेस है 203.0.113.6/30. ठीक है, and this is internet. ठीक है, any doubt so far? इसमें कुछ समझा नहीं? Any part of this that is not understood? Excuse me. अच्छा, /24 है मतलब कितने, इसमें कितने पीसीज होंगे इस नेटवर्क में, इस सब नेट में? नंबर बताओ बस। Sir, 3. कितने? 3. नहीं, so this is a subnet. ठीक है, I won't draw, but 10.0.0.10/24 is a subnet. कितने पीसीज है? .20 is also one of those ये what do you say, PCs in the subnet. So just tell me कि number addresses हम देखते हैं. We'll check the addresses. Is it 254? 250? 254? Yes. And how did you come to that number? So 0 is network address and 255 is broadcast address. वो ठीक है, but Then, yes. हाँ, okay, sorry. Yeah, continue. so then 256 minus 2 equals to 254. Yes, but वो 250 कहाँ से आया, कैसे नंबर आया? How did you calculate to 256 minus 2? Based on this Sir, /20. Sir, two addresses are reserved out of that. One for the network address and one for the broadcast address. That's fine. But हाँ मेरे कहने का मीनिंग था कि वो जो टोटल नंबर है सबनेट में कि इतने हैं 256, ये नंबर कैसे आया? What calculation did you use to get? Why not 512? Why not 1000? Why not 32? Why not 64? तो
Sir, वो total number of address in /24 subnet is 2 to the power 32 minus 24. That is Yes. 2 power 8. That is 256. Yes, thank you, correct. So that's how it is there. तो इसमें is in this subnet there are एक पीसी नहीं है, there are 254 यहाँ कहीं पे होंगे. Okay, so the range goes from 10.0.0.0 up to 10.0.0.254 and we have PC number 10. ठीक है, इसको थोड़ा okay. अच्छे से लिखता हूँ इसको. Dot 10.24. ठीक है. Now I say I want to send a message from PC1 to PC2. ठीक है. For example, I say ping. What is the IP address of this? 10.0.0.20/24. Obviously /24 is not taken when pinging. You just write this. Okay, so ping 10.0.0.20. So I am saying कि from my PC I want to send a message to PC2. तो बोलता है ठीक है. So first let's come to the network layer. Network layer उसमें लगेगा header. याद है किसी को network layer का header? Okay, तो सबसे पहले there will be source IP, okay, which is this. Let me change color. ठीक है, so that's 10.0.0.10. Then we have destination IP. उसका है 10.0.0.20. Okay, then we have TTL. TTL means time to live. TTL याद है कि भूल गए? What's TTL? And please don't say time to live. router hop याद है कुछ? It decided how many hops do it need. Yes, and what is one hop count? Okay, let's come to that. उससे पहले, so there is TTL, then there is other, and in the end ये हमारा ping जो था. Okay, so this is the header and this is the payload. So far so good. कोई डाउट? ये हमारा हो गया मैसेज यहाँ पे. Any doubts? ठीक है. Now
नेटवर्क लेयर के बाद कौन सा लेयर आता है? नेटवर्क लेयर के बाद Physical layer. Data link layer. यस, फिजिकल लेयर इज लास्ट। वो मतलब ऊपर से नीचे जाओगे तो लास्ट, नीचे से ऊपर आओगे तो फर्स्ट। सो नेटवर्क लेयर के बाद आता है Transport Data layers. link layer. नो, वी आर कमिंग डाउन। सो Data link layer. या डेटा लिंक लेयर, वी आर कमिंग डाउन। हमने सब कर लिया, अब नेट एप्लीकेशन वगैरह हो गया, ये सब दिख गया, मैंने व्हाइट बोर्ड पे लिखा ये वो। अब टाइम टू सेंड अ पिंग, ये जो इसमें है ना, लाइक पिंग 10.0.0.20 को भेज रहे हैं ना, लाइक दिस। ओके, सो वी आर कमिंग डाउन। सो वी नेटवर्क लेयर में दिस इज द हेडर, बिकॉज वी नीड, अब पता होना चाहिए कि हम कहाँ भेज रहे हैं। सो मुझे पता है कौन भेज रहा है, सोर्स आईपी, कहाँ भेजना है, डेस्टिनेशन आईपी, कब तक ये मैसेज जिंदा रहना चाहिए उस नेटवर्क में, इंटरनेट में कब तक जिंदा रहना चाहिए, टीटीएल। तो उसका कैसे रहता है, वन, सपोज इसका वैल्यू है 120, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू, क्या फिर से, ठीक है। दिस इज 120 फॉर एग्जांपल, अदर में नॉट रिलेवेंट। और पिंग इज व्हाट वी टाइप, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, द मैसेज दैट वी आर गोइंग टू सेंड, ठीक है। फिर आते हैं हम डेटा लिंक में। अब डेटा लिंक में लगते हैं क्या, you need source MAC address. Again, if you don't remember, go to the previous lecture and see headers में क्या लिखा था। Okay, you need the destination MAC address. क्यों? क्योंकि फिजिकली भी तो पता होना चाहिए ना किसको भेज रहे हैं। Like I said, वो IPv4 चेंज होते रहता है। ओके, सो वो कहीं भी हो सकता है, बट किस मशीन को भेजना है, डेल वाला लैपटॉप जो मेरे पास है उसको भेजने के लिए यू नीड टू नो द मैक एड्रेस जो मैन्युफैक्चरर ने बना के दिया है उस इंसान, उस मशीन को। ओके, सो दैट इज व्हाई यू नीड इट। सो देयर इज डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, देन देयर इज L3 प्रोटोकॉल, लेयर 3 प्रोटोकॉल। मतलब यहाँ पे जो लेयर 3 पे जो लगाया था वो कुछ भी हो सकता है, अगेन नॉट रेलेवेंट for now, we can check it out later। और फिर आता है हमारा पूरा ऊपर का हेडर। ओके, दिस होल थिंग comes down as payload, ठीक है, पेलोड। इसको जूम इन करोगे तो क्या दिखेगा, ये दिखेगा, ठीक है। एनी डाउट्स? ठीक है, नाउ लेट्स गो बैक टू द फिगर, ठीक है। अब सोर्स मैक एड्रेस क्या है, वी नो, लेट्स से इट इज बेस्ड ऑन दिस, सॉरी, बेस्ड ऑन दिस PC1 PC2, ये जो डायग्राम है इसको याद रखो, ठीक है। बेस्ड ऑन दिस I'll quickly draw the diagram here. So we have PC1, it is sending a message to PC2, there is a switch, there is a router, and there is internet, okay. So we are communicating PC1 to PC2। PC1 का is us, जो मैसेज भेज रहा है, उसका सोर्स मैक एड्रेस I know, I just showed you, right? Let's IP config/all, क्या है, 60 AE E2। Again, I'll just write the first two letters, 60 AE, okay. This is the source, but I don't know the destination MAC address। मुझे सिर्फ डेस्टिनेशन का IPv4 पता है, इसका मैक एड्रेस नहीं पता है।
Okay, and in order to find out इसका आंसर कि ये मैक एड्रेस क्या है, we use ARP, address resolution protocol, to find out ये डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या है, जिसको हमें मैसेज भेजना है उसका मैक एड्रेस क्या है, ये जानने के लिए आई एम गोइंग टू यूज ARP, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ओके, तो उस केस के लिए मैं क्या करता हूं, इस पूरे नेटवर्क में आई सेंड अ पैकेट। ठीक है, मैं क्या बोलता हूं कि who has 10 dot, so who is, let's say who is 10.0.0.20/24, okay, who is 10.0.0.20। तो ये मैसेज जाता है इस पीसी को, राउटर को एंड व्हाटएवर। ठीक है, लाइक आई सेड इसमें 254 है टोटल, सो दिस who is 10.0.0.20, this message goes to the entire network। ठीक है, वो सारे 250 पीसीस को जाएगा। ठीक है, it also goes to this PC2, it goes everywhere, it goes in every network। okay, this message goes here, it goes to the switch, it goes to PC2 as well। ठीक है, अगर आईपी एड्रेस ये नहीं हुआ, द नेटवर्क ड्रॉप्स इट। ठीक है, तो हमारा PC1 यहाँ पे है एंड इट इज कनेक्टेड टू PC3, PC100, PC121, whatever, none of this have address 10.0.0.20। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, इस मैसेज को दे ड्रॉप इट, मतलब इग्नोर कर देते हैं, दे डोंट रिप्लाई नथिंग। ठीक है, लेफ्ट पे छोड़ देते हैं, रेड पे छोड़ देते हैं। बट ऑन दी अदर हैंड PC2, ठीक है, जिसके पास ये है आईपी एड्रेस, वो कहता है कि I have this address which is 10.0.0.2। ठीक है, and when he says that, he also replies with its MAC address। ठीक है, so for example इसमें कैसे होगा फिर, I'll show you। फॉर नाउ एक ऐसे ही मैसेज जाता है, ठीक है, डेटा लिंक लेयर में, उसमें क्या रहता है, उसमें रहता है सोर्स मैक एड्रेस जो अपना है 60 AE, और डेस्टिनेशन में अब जाता है, डेस्टिनेशन मैक में जाएगा F F F F F F F। okay, what this F means is send it to all। तो ये नेटवर्क में, ये जो नेटवर्क मैंने दिखाया है यहाँ पे, इट विल गो टू एवरीवन। ठीक है, इस सबको जाता है। और हमने क्या पूछा था, हमने पूछा था who is 10.0.0.20। ठीक है, फिर ये मैसेज कहाँ जाएगा, ये मैसेज जाएगा PC2 के पास। ठीक है, PC2 चेक करेगा कि क्या मेरा आईपी एड्रेस ये है, इट इज, सो नाउ इट सेंड्स बैक द मैक एड्रेस नाउ। ठीक है, ये था सोर्स, ये था डेस्टिनेशन। अब क्या होता है, अब सोर्स, डेस्टिनेशन और आंसर टू आवर क्वेश्चन मैसेज। ठीक है, अब सोर्स बन गया जाएगा डेस्टिनेशन, क्योंकि हम वापस भेज रहे हैं उस डेटा को। ठीक है, और इस PC2 का सोर्स होता है लेट्स से पिक 41B9।
41B9, which is the source. Answer is also 41B9, which is the MAC address. Okay. अब हमें मिल गया हमारा MAC address. So let's go to the original packet. ठीक है. We had our source. Now we have our destination, जो कि हमें यहाँ पे मिला 41B9. 41B9 हमारा जो लेयर 3 प्रोटोकॉल था पहले से, एंड देन जो हमने मैसेज भेजा था विच इज पिंग. ठीक है. दिस इज हाउ ARP वर्क्स. एनी डाउट? डू यू नीड मी टू रिपीट? समझा सबको? यस, नो? कोई पार्ट जो नहीं समझा? सो गए क्या? Is anybody there? Sir. Okay, thank you. One person. Yes, sir. Yes, sir. Okay, 3 are there. तो yes, no, बोलो. समझा? नहीं समझा? डरते वरते हो क्या तुम लोग? अरे say something. मुझे कैसे पता चलेगा तुमने समझा है नहीं समझा है? तो थोड़ा सा समझ में आया, थोड़ा सा समझ में नहीं आया. Thank you at least for answering. Okay, good. एक को थोड़ा समझ में आया, एक को नहीं आया. बाकी लोग? सर थोड़ा मतलब कम आया, ज्यादा नहीं मतलब. Okay, okay. Next. नहीं आया सर. सर. Okay. ठीक है. I'm assuming बाकी लोगों को भी नहीं है. Okay. ठीक है. पहली बात, ये नेटवर्क सेटअप समझ में आया क्या, ये बताओ. Let's go piece by piece, but please say yes or no. I mean, it doesn't take much to say yes or no. ये सेटअप समझ में आया क्या? Yes, sir. Okay, good. बाकी लोग? Yes, sir. Yes, sir. हाँ. यस सर. ठीक है. Now, my objective is यहां से PC1 को PC2 को मैसेज भेजना है. What is that message? It is ping. ठीक है. तो एक्चुअल में मैं कैसे करूंगा? I'll go to command line. You are able to see my command line, right?
Yes. Yes. So I say ping. Okay. 10.0.0.20. हम अभी हैं, अज्यूम करो हम अभी हैं एप्लीकेशन लेयर में. ये कमांड प्रॉम्प्ट जो दिख रहा है ये मेरा एप्लीकेशन है. उसमें मैं जो टाइप कर रहा हूँ वो प्रेजेंटेशन लेयर है. ठीक है. ये जो तुम्हें इंग्लिश में दिख रहा है PING और ये सब प्रेजेंट हो रहा है ना, ये तुम्हें दिख रहा है. सो ये प्रेजेंटेशन लेयर है. एज सून एज आई प्रेस एंटर, दिस गोज इनटू नेक्स्ट लेयर विच इज नेटवर्क लेयर. ठीक है. अब यहां तक ओके, गुड. इसमें कोई डाउट? नो सर. Okay, one. Others, fast. Yes, no. Yes, sir. Okay, so you understood. Two people understood. Shrecha, Momita. Yes, sir. Okay, three people understood. So now we have come down to network layer. ठीक है. एप्लीकेशन लेयर में मेरा कमांड प्रॉम्प्ट था, कमांड लाइन था. उसमें जो मुझे दिख रहा था, जो मैंने टाइप किया, वो मेरा प्रेजेंटेशन लेयर था. और जब मैंने एंटर प्रेस किया, मैं आ गया नेटवर्क लेयर में. अब हर लेयर पे there are certain rules that are applied. What are rules? Nothing but protocols. Rules का दूसरा नाम प्रोटोकॉल है. Is just a fancy word for rules. Nothing else. तो जब मैं ये यहाँ पे नेटवर्क लेयर में आया, तब वहां पे एक हेडर ऐड हुआ. हेडर क्यों? क्योंकि पता होना चाहिए ना ये पिंग किसको भेज रहा हूं. ये जो मैंने यहाँ पे टाइप किया है, ये हाउ विल यू नो कि किसको भेजना है? व्हेन आई राइट अ लेटर, जब मैं कोई खत लिखता हूं, तब उस पे तुम लिखते हो ना फ्रॉम एड्रेस, राइट? सेंडर्स एड्रेस, किसको जाना है, फ्रॉम एंड टू लिखते हो ना. दैट इज नथिंग बट दिस. सो मेरा फ्रॉम क्या है? सोर्स आईपी. मेरा टू क्या है? डेस्टिनेशन आईपी. सिमिलरली ये पिंग को जो मैंने मैसेज लिखा है, वो मैसेज भेजने के लिए भी तो ये सब लगेगा, रूल्स लगेंगे कि कहाँ से आया है, कहाँ जा रहा है. ठीक है. कब तक रहेगा. तो ये 120 जो है ना, टाइम टू लिव, ये कब तक रहेगा? मतलब वो लेटरमैन, पोस्ट वाला, कब तक घूमता रहेगा इस एड्रेस को ढूंढने के लिए? वो भी तो थक ही जाएगा ना. तो मान लो 120 घर देखने के बाद वो बोलेगा कि भाई नहीं हो गया, मुझे नहीं मिल रहा है, ये कहाँ, इसको मैं फेंक दे रहा हूँ. ठीक है. तो टाइम टू लिव मतलब ये जो तुम सॉरी, लाइट्स चली गई हैं. ओके, सो आई एम स्विचिंग माय कैमरा ऑफ, बट अदर्स विल स्विच देयर कैमरास ऑन, प्लीज. We're in the last few minutes of our lecture. Please switch on the cameras. Good, thank you. Okay, मेरा स्क्रीन अभी भी शेयर हो रहा है ना? दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Trying to reconnect. Anyway, कुछ कर नहीं सकते. That's because the light is not there. Okay. So, like I said, so time to live is nothing but telling कि ये मैसेज कब तक रहना चाहिए. Imagine 120, the number means 120 घर. So 120 IP एड्रेसेस चेक करने. हमारे पास कितने थे? 250 थे. याद है? It from 0 to 10.0.0.250.
सो व्हाट विल हैपन, एक घर चेक होगा, दूसरा, तीसरा, अगर 120 के बाद उसको नहीं मिला तो इस मैसेज को वो फेंक देगा. दैट इज व्हाट टीटीएल इज, सिंपल टर्म्स. इसको एकेडमिक टर्म्स में आई टेल यू लेटर ऑन. अभी के लिए तो इस मैसेज नेटवर्क लेयर में आए, उस पे कुछ क्या कहते हैं, एनवेलप लगेगा टू टेल कि कहां से आया है, फ्रॉम, एंड कहां जा रहा है. तो सोर्स आईपी हुआ, डेस्टिनेशन आईपी हुआ, कब तक ये रहना चाहिए नेटवर्क में, कब तक मैं एड्रेस को ढूंढूं, अदर्स में फालतू का इंफॉर्मेशन समझ लो. एंड लास्ट में है हमारा ये मैसेज पिंग. क्या मैसेज, जो मैंने लिखा था कमांड लाइन में, पिंग 10.0.0.20. ओके, यहां तक समझ में आया क्या? इस पार्ट तक किसी को कोई डाउट? No, sir, no doubt. सर ठीक है. नाउ अब इसको टाइम टू सेंड इट अहेड. ठीक है, पोस्ट ऑफिस से एनवेलप लगा दिया. नाउ यू डिपॉजिटेड इन द पोस्ट ऑफिस. तुम पोस्ट ऑफिस गए, ये लेटर दे के आए. नाउ फॉर द पोस्टमैन और पोस्ट ऑफिस टू डिलीवर, उनको और दो एड्रेसेस चाहिए, और एक एड्रेस चाहिए, सॉरी, विच इज मैक एड्रेस. तो उसमें फिर से लगते हैं एक और एनवेलप. तो ये था तुम्हारा मैसेज, उस पे लग गया ये एनवेलप, उस पे लगेगा और एक एनवेलप. ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन समझ में आ रहा है? तुम्हारा मैसेज क्या था, पिंग, उस पे लग गया एक मैसेज जो कि था नेटवर्क लेयर का. ठीक है, उस पे और एक एनवेलप लगेगा जो कि है डेटा लिंक लेयर का. और उसमें क्या रहता है, सोर्स मैक एड्रेस, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, एक प्रोटोकॉल यानी कि रूल्स, कौन से लेयर का, लेयर 3 रूल्स, और तुम्हारा जो भी मैसेज था. इस केस में ये मेरा मैसेज है, ये यहाँ पे, दिस इज माय मैसेज. तो वो खत यहाँ पे बेसिकली मैसेज. ओके, अब तुमने खुद दिया है तो तुम्हें तुम्हारा खुद का मैक एड्रेस तो पता है, राइट? इट वाज 60 AE. ठीक है, अब जिसको भेज रहे हो तुम्हारे दोस्त को, उसका तुम्हें सिर्फ आईपी एड्रेस पता है, बट आईपी एड्रेस चेंज होता है, चेंज रह सकता है. मान लो वो किसी वैन में रहता है और उसकी वैन बस घूमती रहती है. ठीक है, अगर वैन घूमती रहेगी, MH नंबर प्लेट उसकी बदलेगी, MH गुजरात के लिए GJ, चंडीगढ़ के लिए CH, राइट? तो फिर कैसे ढूंढोगे उसको, एग्जैक्टली वो वैन कैसी है ये कैसे समझेगा? फ्रॉम द मैक एड्रेस जो कि यूनिक है. तो जब फॉर एग्जाम्पल मारुति सुजुकी ने वो गाड़ी बनाई, उसको एक यूनिक एड्रेस दिया ताकि तुम दुनिया में कहीं भी हो, तुम्हारा एड्रेस भले ही चेंज हो, वो मैक एड्रेस, वो यूनिक एड्रेस चेंज नहीं होगा. एंड दैट इज व्हाई यू नीड डेस्टिनेशन एड्रेस, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, so that you can send the message in a network. But ये मैक एड्रेस, ये डेस्टिनेशन एड्रेस मुझे पता नहीं. I don't know. Do you see me typing anywhere? मैंने सिर्फ आईपी एड्रेस टाइप किया है, मैक एड्रेस मुझे नहीं पता. मुझे मेरा पता है, आई नो माई मैक एड्रेस, मेरा यूनिक एड्रेस मुझे पता है, 60 A5 E2 ये वगैरह. लेकिन मैं जिसको भेज रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल आई एम सेंडिंग इट टू श्रेचा, आई डोंट नो हर मैक एड्रेस. ठीक है, और मुझे नहीं पूछना उसको. ठीक है, मैं नहीं करूंगा मैसेज, कॉल, व्हाटएवर, मुझे नहीं पूछना. सो देयर इज अनदर वे ऑफ फाइंडिंग आउट how ARP to find the destination MAC address. We are going to use protocol ARP. Okay, let's stop. इस यहां तक किसी को डाउट?
नहीं No, सर। sir. ओके, गुड। अब ठीक है, इसको रखो साइड में। ठीक है, इसको हम रखते हैं साइड में। ठीक है, इसको एक डेस्क पे रख दो। अब क्या कहते हैं, फॉर द टाइम बिंग, जब अब हमारा टास्क क्या है, ये डेस्टिनेशन मैक एड्रेस ढूंढना। ठीक है, इसको हमने रख दिया साइड में। तो उसके लिए मैं सोर्स क्या करता हूं, मैं पूरे क्या कहते हैं नेटवर्क में या फिर पूरे पुणे सिटी में फॉर एग्जांपल मैं मैसेज भेज देता हूं कि भाई किसका एड्रेस 100020 है बताओ। ओके, अब ये एड्रेस भी सेम तरीके से जाएगा, सेम जैसे ये वाला गया है ना, ये यहाँ पे कहाँ है अपना नेटवर्क, सॉरी, मैंने अभी बताया 60 AE। ठीक है, नाउ अब फिर से प्रॉब्लम क्या आता है, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा गोल क्या है, मेरा गोल है सबको भेजना। तो मुझे फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे मैं क्या डालूं, इसीलिए मैं यहाँ पे डालता हूँ एफ 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 एफ। जब भी उस एनवेलप पे फ्रॉम एड्रेस ये है 60 AE और टू एड्रेस में अगर एफ 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 दिखा, इसका मतलब है ये खत सबको भेजो, सबको। उस नेटवर्क में 250 पीसीस थे, उन सबको भेजो। पुणे शहर में अगर 70 लाख लोग हैं तो सारे 70 लाख लोगों को ये मैसेज भेजो, ये लेटर भेजो, इसका मतलब होता है। ठीक है, और उस खत में मैसेज क्या लिखता हूं मैं, हु हैज 100020। ठीक है, अब जितने लोगों को भेजा है उन सबको उनका आईपी एड्रेस पता होगा, जैसे मुझे पता है। आई सी माई आईपी एड्रेस 192.168.230.80। देखो चेंज हो गया। डू यू रियलाइज पहले क्या था? यू सी व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, इट चेंज्ड। डू यू रिमेंबर व्हाट माय प्रीवियस आईपी एड्रेस वाज? डोंट वरी, एग्जांपल पे मैंने लिखा है, इट वाज हियर समवेयर पे लिखा था। हाँ ये देखो, सी पहले क्या था मेरा, 192.168.0.101। अब क्या हुआ है, 192.168.230.180। ऐसा क्यों हुआ? Is it for Wi-Fi and mobile network? करेक्ट, मेरे यहाँ लाइट चली गई थी तो आई Yes, sir. शिफ्टेड फ्रॉम वाईफाई टू मोबाइल नेटवर्क। मैंने कहा था जियो से टाटा से इसमें चेंज करोगे तो आईपी एड्रेस चेंज होगा। क्यों? क्योंकि वो लोग हैं जो तुम्हें आईपी एड्रेस देते हैं। दिस इज अ गुड एग्जांपल। सो नाउ आई मीन, इज इट क्लियर better now? Yes. Yes, sir. Right, my IP address changed, but what is the one thing that is not going to change? MAC address. MAC address. Correct. And that is why I need to find out कि MAC address क्या है, क्योंकि वो मैसेज जाना चाहिए। अब IP एड्रेस तो गया, तो now it's time to find the MAC address, because वो मैसेज जाना तो चाहिए ना, उसको ऐसे थोड़ी ये कर सकते हैं। ओके, सो बैक टू द ये। सो आई से who has 100020। तुम सबको तुम्हारे पता है, जैसे यहाँ पे था, if you do IP config you'll know what you are. So for example, if Shrecha is 30, she will say the message is not for me, she'll throw it in dustbin.
Digvijay will check. Hai? No, not mine. Throw it out. Kuber will check. He says, yes, I am 100020. This is me. Okay. And then what you will do, इस मैसेज को रिप्लाई तो करोगे ना, ये जो तुम्हें मैसेज आया इसका खत का रिप्लाई तो करोगे. तो रिप्लाई में तुम क्या करते हो? अगेन तुम तुम्हारा सोर्स मैक एड्रेस डालते हो, विच इज A1B9. ये कहाँ जाएगा? मेरे तरफ आएगा, मुझे आएगा, विच इज 60 AE. और इसमें होगा अगेन A1B9. वाई? बिकॉज दिस इज द मैसेज. ठीक है. इसके ऊपर एक और ये लगेगा जब भेजोगे. कौन सा लगेगा? ये तो डेटा लिंक लेयर वाला होगा. और अगर सिंप्लीफाइड करूं तो लेट्स सी, दिस इज A, दिस इज B. ठीक है. नेटवर्क लेयर, इसमें लगा सोर्स IP, इसमें लगा डेस्टिनेशन IP. ठीक है. इसमें लगा सोर्स मैक, इसमें लगा डेस्टिनेशन मैक. इसमें मेरा था विच इज क्या था भाई? 60 AE. डेस्टिनेशन वाज FFFF, क्योंकि सबको भेजना था. तो ये गया यहाँ 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 यहाँ. एंड इट ऑल्सो वेंट टू B. ठीक है. B ने इसको खोला, उसने देखा, सॉरी क्या था, उसने देखा मैसेज, उसने मैसेज देखा, उसने बोला हाँ यार 10.0.0.20 तो मैं हूं. ठीक है. वेट अ मिनट, आई विल सेंड यू माई क्या कहते हैं, आई विल सेंड यू माई ये मैक एड्रेस. ठीक है. तो फिर से अब यहाँ पे सपोज सोर्स वाज 10, डेस्टिनेशन वाज 20. ठीक है. अब फिर से भेजना इसको वापस. दिस हैज टू गो फ्रॉम बैक टू दिस. ओके. दिस हैज टू गो बैक. तो अब डेस्टिनेशन क्या होगा? 10. सोर्स होगा 20, डेस्टिनेशन होगा 10. A is 10 by the way, B is 20. ठीक है. जब A से B को जा रहा था तब सोर्स was 10, डेस्टिनेशन was 20. जब B से A को जा रहा है, सोर्स becomes 20, डेस्टिनेशन becomes 10. ठीक है. फिर आता है सोर्स मैक एंड डेस्टिनेशन मैक. सोर्स में B अपना खुद का डालेगा, ओके, विच इज A1B9. और डेस्टिनेशन में क्या डालेगा? A का. और उसको कैसे पता? क्योंकि इसने खुद ने जब भेजा था तब खुद का डाल के भेजा था ना, राइट? A0 AE. ठीक है. ये प्रोसेस समझ में आया यहां तक? Yes, sir. राइट. सेम प्रोसेस फॉलो होता है. ये हमारा अभी जो हमने साइड में रखा था, ये अभी भी साइड में ही है. जो ओरिजिनल हमारा जो ओरिजिनल पैकेट था, ओरिजिनल खत जो हमारा था, ओरिजिनल पैकेट जो था, ये अभी भी साइड में ही रखा हुआ है. हम ये सब क्यों कर रहे हैं यहाँ पे? ये जो कर रहे हैं यहाँ पे एक्सचेंज, ये जो एक्सचेंज कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? दिस इज टू फाइंड द मैक एड्रेस ऑफ द ओरिजिनल पैकेट. ठीक है. उसमें भी सेम रूल्स फॉलो होते हैं. आईपी एड्रेस होता है, मैक होता है. उसमें सोर्स क्या था? 10, भेजना कहाँ है? 20. 10 इज A, B इज 20. ठीक है. फिर उसमें मैंने अपना खुद का सोर्स मैक डाला. मुझे डेस्टिनेशन पता नहीं है, इसीलिए मुझे सबको भेजना है, तो मैंने डेस्टिनेशन मैक में हर जगह F डाला. अब ये सबको गया, B को भी गया. B ने मैसेज को खोला, उसने वो खत खोला, पढ़ा,
उसमें उसने देखा कि हाँ 20 तो मैं ही हूं, ठीक है, तो वो करेगा अब रिप्लाई। रिप्लाई में सोर्स चेंज होगा, क्यों? क्योंकि अब बी भेज रहा है। डेस्टिनेशन क्या होगा? 10, क्योंकि ए को वापस भेजना है। अब बी मैसेज में क्या डालेगा? वो अपना सोर्स खुद का मैक डालेगा एंड डेस्टिनेशन में डालेगा ए का, जिसको एक्चुअल में भेजना है। एंड दिस इज हाउ वी गेट द डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। अरे यार, ठीक है, लेट्स पिक अनदर कलर। दिस इज हाउ we get the destination MAC address। अब इस डेस्टिनेशन मैक एड्रेस को लेंगे, जो साइड में खत रखा था, एनवेलप रखा था, उसको उठाएंगे और उसमें वो नया वाला आईपी एड्रेस, सॉरी डेस्टिनेशन मैक एड्रेस डाल देंगे। रूल सेम रहेगा, L3 प्रोटोकॉल जो रहेगा, और मैसेज में वही हमारा ओरिजिनल जो मैंने लिखा था पिंग 10.0.0.20, वो वैसा का वैसा ही है अभी भी। बेटर? Yes, sir. Yes, sir. अगर मैं Yes, कल sir. एक्सप्लेन करने को बोलूं तो एक्सप्लेन कर पाओगे? हाँ बोल दो यार, बाद Yes, में sir. देखा कर जाएगा, लेंगे। उसमें क्या है। हाँ बोलना सीखो यार, तुम पूरी माइक्रोसॉफ्ट ऐसे ही बनी है, तुम क्या क्यों नहीं कर सकते? पता है ना तुमको, उसने ऑर्डर लिया और बोला हाँ रेडी है सब, जबकि कुछ भी रेडी नहीं था। वो बाद में जाके उसने सीखा देखा फिर बनाया। बोलते जाओ हाँ, बाद में सीख लेना, उसमें क्या है, तुम्हारे पास पूरा दिन है, आज फिर से सीख के तुम कल दे सकते थे एक्सप्लेनेशन। ओके, बी कॉन्फिडेंट। ओके, ठीक है। सो दिस अगेन, तो थोड़े लिमिटेशंस व्हाइट बोर्ड की वजह से तो ऐसा ठीक से एक्सप्लेन नहीं मे बी कर पाया, बट आई होप ये समझ में आया कि हमारा जो ओरिजिनल पैकेट है वो हम उसको साइड में रखते हैं, फिर डेस्टिनेशन ढूंढने के लिए ये प्रोसेस फिर से फॉलो करते हैं। द ओनली डिफरेंस इस पूरे प्रोसेस में कहाँ आता है? जब तुम ये FFF भेजते हो हर डेस्टिनेशन में, ठीक है, क्यों? क्योंकि तुम्हें हर पीसी को मैसेज भेजना है। अब हर पीसी का तो तुमको मैक एड्रेस नहीं पता ना, तो तुम क्या करते हो? FF लिखते हो हर जगह, तो सब कंप्यूटर को समझ में आता है कि हमें सबको भेजना है। ओके, क्लियर? Yes, sir. यस। Yes, sir. Then the person receives the message, वो कहता है कि hey, this is my MAC address, ticket, और फिर वो ओरिजिनल हमारा जो था उसमें डालता है and the message sends। अब what I meant by time to live, तो याद है मैंने कहा था कि वो टाइम टू लिव का नंबर था 120, तो वो 120 घर चेक करेगा, उसमें से हुआ तो ठीक, नहीं तो निकाल देगा। तो दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग। कंप्यूटर्स के टर्म में जब एक राउटर से दूसरे राउटर पे मैसेज जाता है तो वो काउंट -1 होता है, इट बिकम्स 119, क्योंकि एक हॉप हो गया यहाँ पे। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट इज नथिंग बट सर्वर्स जो कि राउटर से कनेक्टेड है, दैट्स इट, दैट इज नथिंग बट इंटरनेट। राउटर्स है और उस सबको कनेक्टेड पीसीज और सर्वर्स हैं, ठीक है। इंटरनेट इज अ बंच ऑफ राउटर्स, 80 to 90% राउटर्स। तो कैसे होता है, एक राउटर से दूसरे राउटर जब जाता है तब उसको बोलते हैं एक हॉप, एंड व्हेन दिस वन हॉप इज कंप्लीटेड वो काउंट माइनस होता है 122 -1 विच इज 119, ठीक है। तो एक्सक्यूज मी,
So that is how the TTL is. Let's try to get an example. Suppose if I do ns lookup google.com, ठीक है, ठीक है, गूगल हैज टू एड्रेसेस, एक IPv6 है, एक IPv4 है। तो इस सिनेरियो में कैसे होता है, ये मैं हूं, दिस इज मी, ओके, आई डिड अ पिंग मैसेज टू गूगल, गूगल सर्वर, उस सर्वर का एड्रेस क्या है 142 250 67 142, ठीक है। Now if you were paying attention and if you were there in the previous lectures, what type of address is this? Sir, public address. Great, correct, it's a public address। प्राइवेट वाले सिर्फ 3 रेंजेस में से हैं। if you come here, this 10 172.16 192.168, these are the only private IP address ranges। ये पब्लिक है, इसीलिए मैं उसको पिंग कर पा रहा हूं, इसीलिए मैं उसको रीच आउट कर पा रहा हूं, ठीक है। अगर ये प्राइवेट होता तो आई वुडंट हैव बीन एबल टू पिंग इट। ओके, क्लियर सो फार? Yes. यस, नो, Yes, sir. ओके। अब Yes, ये sir. तुम्हें दिखते वक्त तो ऐसे दिखता है, बट एक्चुअल में कैसे होता है, ये मेरा पीसी है, एक राउटर आया, फिर से एक राउटर आया, ये पुणे का राउटर, ये महाराष्ट्र का राउटर, ये इंडिया का राउटर, फिर ये यूएसए का राउटर, फिर ये कैलिफोर्निया का राउटर, फिर ये कैलिफोर्निया से ये रहा गूगल का बाहर का राउटर, और फिर उसके बाद आता है, सॉरी, और फिर उसके बाद आया गूगल का सर्वर जो था 142 डॉट समथिंग समथिंग डॉट समथिंग समथिंग डॉट समथिंग समथिंग, कुछ तो कुछ तो कुछ तो, ठीक है। दिस इज हाउ इट इज। तो मैंने कहा था TTL इज 120, मतलब मेरा मैसेज इस नेटवर्क में या फिर इंटरनेट पे 120 हॉप्स तक जिंदा रहना चाहिए। दिस इज 1 हॉप, ठीक है। सो 120 माइनस 1 119, दिस इज सेकेंड हॉप 118, थर्ड हॉप 17, वन मोर हॉप 15 14 एंड रीच्ड, ठीक है। सो इट रीच्ड द सर्वर in 6 हॉप्स। काउंट 0 हुआ नहीं तो मतलब मेरा मैसेज जाएगा, अगर काउंट मेरा 0 के नीचे जाता तो मेरा मैसेज यहां पहुंचने से पहले ही ड्रॉप कर दिया जाता। बिफोर रीचिंग द सर्वर it would have been dropped। Understood? That is what TTL is, time to live, उस मैसेज के जिंदा रहने का टाइम। Got it? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. See if we can tracer था कि trace route था, let's see, 142.250.67.142 67.142, okay, trace route 50.67.142। अरे यार क्या है, Sir, TRACERT है। TRA CERT। ओके 140, shit man,
Okay, trace route is a command which routes कि मेरे से गूगल तक क्या क्या बीच में आ रहा है, ठीक है। ट्रेसिंग राउट, सिंपल इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं वही उसका मीनिंग है कि मैं राउट ट्रेस कर रहा हूं मेरे पीसी से लेके वहां तक। ये दिख रहा है, ओवर अ मैक्सिमम ऑफ 30 हॉप्स, ठीक है। सो इट वेंट फ्रॉम 190 टू 168.2 कुछ तो था जो मेरा ये था, मेरा था। सो ये उल्टा जा रहा है। दिस इज माया, ये अननोन जो है ये मेरा सर्वर है। ट्रेस कंप्लीट मतलब कितने राउटर या फिर चीजें हैं मेरे और गूगल के बीच में? अरे यहाँ पे लिखा है यार। 11. Yes, 11. So it went from here. This is my default gateway. Gateway क्या होता है? Again, we'll do that later. फिर वहां से गया इसको, ये क्या है मुझे नहीं पता बट कहीं तो सर्वर होंगे, ठीक है। लेट्स से ये मेरा क्या कहते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का, फिर उसके कंपनी का, फिर पुणे का, फिर महाराष्ट्र का, फिर इंडिया का, फिर यूएसए का, फिर उसके यहाँ का, फिर कैलिफोर्निया के किसी, फिर उनके उनको जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करते हैं उनके राउटर का, और फिर फाइनली आता है गूगल सर्वर पे। तो ये वो सर्वर का नाम है जिसपे google.com चल रहा है और जो मुझे असाइंड है, जहां पे मैं रीच आउट कर रहा हूं। गॉट इट? Yes. क्लियर? यस, अगर ये 0 होता तो मैं कभी यहां तक पहुंच ही नहीं पाता एंड माय टीटीएल वुड हैव बीन 0। ज्यादा ही हो गया क्लास आज, ठीक है। आई शुड हैव टेकन अ ब्रेक बट एनीवे, यस दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू टुमारो। Thank you, sir. जस्ट अ मिनट, प्रथमेश, यस सर। कल करेंगे, ठीक है, प्रेजेंटेशन चलेगा स्टार्ट में। चलेगा सर। आज तो बहुत एक्सटेंड हो गया, ठीक है। चलेगा सर। Tomorrow the first thing is you are going to represent the two that you mentioned, यस सर। ठीक है। मैं एक्सेस दे दूंगा तुम लोग को सारे वीडियोस का आज, एंड आई चेक कि किसने कौन से ये भेजे, ठीक है। सर I'll let या सर एक डाउट था कि जो हाँ आईएसपीज अपने को ये देते हैं ना आईपी एड्रेसेस, हाँ हाँ, सो मतलब दो अलग डिवाइस के सेम आईपी तो हो सकते हैं फिर? एक टाइम पे नहीं हो सकते। सर पर अगर ऐसे बहुत दूर दूर के डिवाइसेस है तो उनके आईएसपी भी बहुत ये होंगे और फिर रेंज तो बहुत कम है ना, तो उसमें से सेम हो सकते हैं आईपी या नहीं फिर? तो सी, तो उसके लिए देयर इज DHCP, राइट, द डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। तो एक टाइम पे, एक सेकेंड, तो एक टाइम पे तो सारे यूज नहीं होंगे, राइट। वो जो आईपी अभी मैं तो अपना पीसी बंद करके चला जाऊंगा तो मेरा जो आईपी एड्रेस है वो खाली हो गया, इट इज फ्री टू यूज। तो कंपनी क्या करेगी, मेरा आईपी एड्रेस लेगी और किसी और को दे देगी जो ऑनलाइन आया है। सो दैट्स हाउ इट टर्न्स, बट दिस स्टिल हैड लिमिटेशंस, दैट इज व्हाई वी केम अप विद IPv4 6, क्योंकि रेंज फिर भी कम पड़ रहा था। पहले तो सिर्फ लैपटॉप्स थे, अब आईपी एड्रेस स्मार्ट टीवी को, स्मार्टफोन को, सबको लगता है। सो दैट इज व्हाई रेंज कम पड़ रही थी और एक साथ सारे डिवाइसेस ऑन रहते हैं, right? So इसीलिए we came up with IPv6. This was the major point in IPv4 versus 6, ठीक है। तो एक पॉइंट पे multiple addresses are not assigned to a device. ओके सर। हाँ, router is a different story, but
endpoint devices, client devices, phone, TV, smartphone, laptop, pads, and all, they never get two IP addresses assigned at a single particular point of time. Okay, that's it, guys. Thank you so much. Thank you, sir. Sure.